Today, I am extremely delighted to have with us Arva Kapasi. She is the founder, director, and CEO at Pathways Foundation. She is a counseling psychologist, Bach flower therapist, vocational skills trainer, and a special educator. She has varied experience in the field of social work and psychology. Let's hear from her about her journey of bringing light and joy in the lives of people who are otherwise ignored. Let's welcome Arva. You are into the field of social service. You are a part of NGOs, and then you do so many things psychological. You are into field of psychology and all. So can you tell me first of all, how did you get into this? Starting an NGO or being a part of an NGO, and what all do you do there? Okay, so to start with psychology, I had never dreamt that I will be a psychologist or something, because I was from a business background, and then when life trauma came and life was difficult with me, there were traumas one after the other. So I already told you that my husband expired in 2005, and then just after that, next year my mummy was diagnosed with cancer. Oh God! So I just came out I had not come out of that one blow, and then there was another blow. I was all thinking that parents are your support when you are in difficult times. Yeah, definitely. So I was holding on to my parents, and then when I got this news, there was like, अब कौन है होगा हमारा heartbroken. So but somehow we were like, my family is there, my siblings are there, my sister, younger sister, my younger brother, we were all kind of taking our turns to do things then for family. It was she used to stay with my sister at her place, but taking care of her hospital needs, like taking her to checkups and every day sitting with her and all that was on me. So being a child, so to talk to doctors and most of the things that we had to do. So once I was my regular trips in my hospital with Mama, I was sitting next to her, and normally hospital has those newspapers, of patients, families to read and all. So I came across a small cutting on one of the Marathi papers, not cutting, sorry, a small article of an institute called IBMS from Andhra Pradesh. It was a distance learning, and they said that they are open to students from any field for psychology, 2 years MS in psychology. So I said, why not? I'm going through a lot of difficulties and depression and stress, and all my frustration used to come out on children after all that I was going through. Then family also, I was suffering, and there was a very difficult phase. So I thought, why not know something about myself and how I can deal with the situation. Yeah. So for that I got into the field of psychology. I did my 1 year, first I completed my diploma, and then after a gap, then I did my second year. So that course, that literature that they had given us to study was so simple. Like the examples were everyday life, how to face it, how to cope with it. It was so simple that I could really feel that the books were written for me. Okay. So it helped me a lot. So with that course, then I went into the field of psychology. It helped me a lot. Then when I came out from that phase of mine, the trauma, depression, trauma, I went into neurological, symptoms also. Oh my God. I had to go to the neurologist to treat myself. But then I felt that I took about medicines for about 2-3 months, and then I said, "अरे मैं पूरी life क्या medicine से I'll
आई विल बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, कब तक मेडिसिन पे काम करती है मैं, और कब तक मैं मेडिसिन के भरोसे ही मेरी जिंदगी चलेगी. आई शुड नो अबाउट माई सेल्फ कि कैसे डील करूँ. सो व्हेन आई केम आउट ऑफ ऑल दोस मेडिसिन एंड वो सब मेरा फेस खत्म हो गया. और फिर मैंने बाक फ्लावर किया. और इंस्टेड ऑफ दोस एलोपैथी मेडिसिन आई वाज टेकिंग बाक फ्लावर व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट. और वो सब की मदद से मैं बहुत आई बिकेम वेरी बैलेंस्ड इन लाइफ. जो भी मेरा सिचुएशन में आई कुड थिंक प्रॉपर्ली, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई पीपल आर बिहेविंग लाइक दैट एंड व्हाई हाउ आई शुड रिस्पॉन्ड. वो सब जब मुझे समझ आने लगा था, आई सेड कि why not help other people with whatever मेरे पास जो आया है, मेरे लिए जो जिस चीज ने अच्छा किया है, why not help other people for it. So then I started working with NGOs. जैसे मैंने दीपग्रह ज्वाइन किया था 2010 में. तो फिर वहाँ ताड़ीवाला रोड पे बस्ती में जो पूरे बस्ती लेवल पे I was to counsel people, but I was working as a part-time counselor there. So children I was counseling. जिसको जरूरत पड़ती थी I used to give the Bach flower remedy also. So 100% जिनको भी the cases I was taking, उनको सबको they came out of that. उनको जो भी troubles थे, they used to feel That's very so nice. good ना. उनके लिए नहीं तो कौन सोचता है नॉर्मली वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर भी काफी ट्रॉमा है, सफरिंग्स है, एंड पीपल आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर आल्सो. Yes. और दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप वहाँ जाकर. और मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन, वहाँ अवेयरनेस नहीं है अबाउट मेंटल हेल्थ. वो दे सफर, एवरीबडी सफर्स, स्ट्रेस सबको होती है अपने अपने लेवल पे. पर वहाँ अवेयरनेस नहीं है कि उनको क्या हो रहा है. दे आर नॉट अवेयर. उनको जब सफरिंग बहुत बढ़ जाती है देन इट शोज इन योर फिजिकल सेल्फ. सो वो फिजिकल सेल्फ में जो सिम्टम्स आते हैं, दे फील कि ये हमारी बीमारियां हैं. बट द रूट कॉज इज समवेयर देयर सफरिंग, देयर स्ट्रेस, मेंटल इम्बैलेंस. तो वो जब ठीक हो जाता है तो उनके फिजिकल सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट बैक फ्लावर इज लाइक. नो, इट ट्रीट्स ऑन द मेंटल लेवल. Okay. So we'll come to backfire therapy also. So NGO में you do this counseling. And what else? What else do you do? और कुछ है जो with you mentioned so many NGOs. Yes. So firstly I had joined Dipgra. उसके बाद then I kept like मैं बहुत सारे मेरे connections build up हुए. I joined another NGO known as Optimus International, जो works on a very international level. पर वो भी ऐसे ही काम करते हैं लेडीज के लिए और बस्तियों में. So I joined that. Very good. Then ऐसे ही कनेक्शंस बिल्ड होते होते देन अ ग्रेट फाउंडेशन मेड विद द फाउंडर इज Dr. Vinay Kirpal. So she approached me and then she said, I am dealing with teenage children. She was guiding children for NEET and the further studies. तो उसके लिए मुझे बच्चों के लिए काउंसलर चाहिए. So then she approached me. I started working with her. Then connecting NGO came into my life. Connecting NGO is into suicide prevention. Okay. So that is something which is very dear to my heart. That we have a beautiful family over there, connecting NGO में, which is like all voluntary service. सब अपने टाइम अपना डेडिकेशन से वहाँ आते हैं और दे गिव द सर्विस. तो वहाँ जो हमारा फैमिली बिल्ड हुआ है उसके अंदर मैंने सिर्फ दिया नहीं है, मैंने पाया भी बहुत है. अच्छा. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम देयर. सो ऑल दीज wherever I have worked have given me many things back. तो वही है ना, life has thrown challenges to you, but from those challenges you have learned something and you wanted to give back to the society. And you are doing so many things. So आपका psychological counseling and all you do, and you are a special educator also. तो इसके लिए आपने कुछ specialized courses किए थे? Yes. So जैसे I was into counseling field, तो फिर मैं
काउंसलिंग वगैरह तो करती ही हूँ, पर साथ में आई केम इनटू इन कनेक्शन विद वन स्कूल नोन एज सुंदरजी's इंस्टीट्यूशन. तो उन्होंने आई वेंट देयर फॉर काउंसलर्स जॉब एक्चुअली विद देम. सो उन्होंने फिर उस वक्त तो उनको वैकेंसी नहीं थी काउंसलर की, बट दे सेड कैन यू वर्क विद स्पेशल चिल्ड्रन. ओके. सो आई सेड वैसे मैंने पढ़ा तो है स्पेशल, आई मीन व्हाटएवर deviations are and conditions of different मतलब बच्चों के डेवलपमेंट डिलेज होते हैं, जो कुछ ऑटिज्म होता है, वो सबके बारे में मैंने पढ़ा तो है. सो आई डोंट माइंड वर्किंग विद देम. सो देन आई जॉइन देम एज अ स्पेशल टीचर, एंड स्लोली आई डेवलप इंटरेस्ट इन वर्किंग विद स्पेशल चिल्ड्रन. वहाँ एक अलग ही बॉन्डिंग होता है स्पेशल बच्चों के साथ. वेरी इनोसेंट. You give them love, you get love. Yes. No, उसमें कोई मिलावट नहीं, no conditions. No conditions, yeah. तो वही है. मैंने I actually came across a few special children when I was doing my drama classes and all. So, the way you bond with them, they are like all into you. Yes. तो that's उनको हमारे बिना बिल्कुल चलता ही नहीं है, एक बार वो कनेक्शन बिल्ड होने के बाद. हाँ. सो मैं बहुत ही उसमें मतलब आई जस्ट फेल के मैं इसी फील्ड के लिए बनी हूँ. हाँ. जो लाइफ पर्पस आपका यही है, लोगों को मेंटली मतलब एक उनके मेंटल बीइंग वेलबींग के लिए काम करना, बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन, उनके लिए भी. हाँ, दैट्स ट्रू. बिकॉज ये कभी सोचा भी नहीं था कि आई विल कम इनटू दिस फील्ड, बट शायद लाइफ ऐसे maybe because your life purpose was that, तो आपको वो आप उसी तरह बढ़ते गए. Otherwise with so many things happening और इतना बड़ा ट्रॉमा अगर लाइफ में आए तो a person might then oneself lose a mental balance. Exactly. But वही है, you actually took strength from wherever you got that strength from divinity or जो भी है, but then you move forward and then try to help people. That's very, very good. So what role your family has played in this all this the journey you've had? Yeah, a very big role, very big support from family. So my children, when my husband expired, were very small. My elder daughter was 7 years, my younger son was 5. So वो support तो था ही बच्चों के लिए, तो everything was secure, वो एक था. But मुझे हमेशा allow किया है कि you do whatever you want. So that is a very big support actually. That is, yes, of course. And so since when my children they became independent, तब से मैं अपने I have been working as volunteer or whatever. So उस वक्त काफ़ी volunteer ही work होता था. Now I have started my own foundation. So it's more of what do you say, a full time job. पर उस वक्त तो अपना जब जहाँ थोड़ा टाइम मिलता था वहाँ ऐसे टाइम volunteership में डालती थी. What is the name of your foundation? My foundation is lately started. It is 3 years. This is my 4th year. It is Pathways Foundation. Pathways Foundation. So you are again the same, mostly dealing with the counseling, the psychological thing, or you do something else also? So in Pathways Foundation, it is this is there of course, because that is my core. Counseling and special education, all that is my core. So वो तो है ही. और उसके साथ हमारे 4 objectives हैं. So we work into education, awareness of kinds whatever is required. फिर preventive health. So preventive health है और skill development of ladies, whoever, not only ladies but even teenagers after their 12th, and giving them livelihood opportunities. Oh, that's good. So all these fall into, these are our 4 objectives. So preventive health के अंदर हम लोग भी do health checkups, eye checkups and all that on the basti level. And cancer awareness, COVID के पहले just वो we had organized, but वो plan नहीं हुआ because मिलना जुलना वो बंद था. So cancer awareness और different kinds of वो सब preventive health जो भी
किसी को बीमारी से बचाने के लिए लाइक नो पहले ही बीमारी में जाने से पहले वो पहले ही अपने आप को पहचान लें क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, एंड सो अवेयरनेस में भी ये सारी चीजें आ जाती है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, जैसे जैसे लगता है इस तरह से लाइक नो यू आर एक्सपैंडिंग डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द whatever is the need of their need. So that's it. Okay. So, whom do you take the inspiration from for all this? Okay. So, talking about inspiration, like no, this is my inspiration. Is of course there are a few lives which we come across. Like no, when I was young, I had seen this one. I had read about Sindhutai Sabkal, और उनकी एक मूवी भी बनी थी मराठी में. So I had seen that movie. So वो एक बहुत strong उनका एक औरत मतलब बहुत. She has also gone through a very difficult time. हमारा Sindhutai Sabkal, yes, she was herself homeless when she adopted children. Yeah. उनको तो घर से प्रेगनेंसी में मार मार के निकाल दिया. उन्होंने डिलीवरी गाय के गौशाला में की है. अच्छा. Yeah, so she has given birth to her daughter in a gaushala. And a cow has become a mother for her. Okay. She was unconscious when she gave birth, and a cow had taken care of her and her child when she had delivered in unconsciousness. उनकी स्टोरी तो my God, it is like कुछ अलग ही है. हम लोग तो मैं बोलती हूँ कि हमारे लाइफ में जैसे कुछ God sent angel टाइप में ही, मैं तो उनको वो ही मानती हूँ. Because हम लोग सोचते हैं अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, if we want to do something for the society, हमारे पास उतना होना चाहिए तो कि हम सोसाइटी को दे सकें. Whereas she started from nothing. Begging. She was begging. And now she has she got so many awards and all. इतना उनका मतलब एक नाम है और सब रिस्पेक्ट करते हैं. सबसे बड़ी चीज वो रिस्पेक्ट उन्होंने बहुत डिफिकल्टी से कमाया है. लाइक she was a beggar. उन्होंने मृत जो शरीर पे लकड़ियां जलती है उस पे अपनी रोटी से. हाँ, मैंने सुना उनका इंटरव्यू एक बार. ओ बाप रे. It's such a difficult life. मतलब मैं तो काफी इंस्पायर हुई थी उनसे. ये सब जब मैंने देखा था कि इतनी मुश्किलों में अगर कोई किसी के लिए कर सकता है, सो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. So that was one inspirational point. Apart from that, that seed of social work I think was sown back in the school. So when we were in the school, I remember कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट रहता था जहाँ पे वी हैड टू डू सम सोशल वर्क. किसी सीनियर सिटीजन के पास जाके थोड़ा सा काम करके वी हैड टू हेल्प देम इन एनी वे. और तो वो जो भी कुछ पैसे दे दे बदले में, लाइक कुछ भी 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपी, जो भी कुछ दे दे वो कलेक्ट करना है. वो कलेक्ट करके आई थिंक वन चाइल्ड वाज गिवन सम टारगेट ऑफ 100 रुपीज और 200 रुपीज. वो उतना कलेक्ट करना था. और वो शायद दैट वाज गोइंग टू गो टू रेड क्रॉस. अच्छा. रेड क्रॉस वाज जस्ट कमिंग अप आई थिंक देन, जब व्हेन वी वर in school. So I was in convent school, so they had given this project. Those money collected was going to Red Cross. फिर हम लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह मिलता था. सो उस वक्त से थोड़ा सा वो तो उस वक्त तो हम लोग प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं. दैट टाइम वी डोंट नो दैट ऑल दिस हम लोग जो कर रहे हैं उसका क्या रिप्रोडक्शन होगा लेटर इन द लाइफ. बट ये जो सीड जो शो करते हैं ना सोशल वर्क का और वो सब, तो वो कहीं रह जाता है अंदर. दैट स्टेज. फिर जैसे बड़ी हुए तो लाइक नो आई जॉइन जेसीज. देन देयर वाज अ जेसीज क्लब करके था. अभी शायद उसका ये नहीं है. पहले बहुत वो था. सो जेसीज ज्वाइन किया था. उनके साथ भी सारे बहुत सोशल कॉजेज हम लोग काम करते थे. देन व्हेन आई वाज इन टीवाई तब लातूर का बहुत बड़ा ये अर्थक्वेक हुआ था. तो बीड़ लातूर में. तो दैट टाइम वी हमारे फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप था. तो वी हैड कलेक्टेड डोर टू डोर जाके हम लोग अनाज, वी हैड कलेक्टेड फूड एंड क्लोथ एंड ऑल. और फिर रास्ते पे हम लोग ने डोनेशन बॉक्सेस बनाए थे रास्ते पर आने जाने वाले के पास से.
we will take Oh one. my So God. इस तरह से हम How inspirational. काफी, Oh my God. पैसा और सब अनाज और कपड़े सब पैक करके we had sent the whole thing to Latu. तो वो सारी चीजें ना कहीं हमारे इसमें वो ये मार्क कर देती है कि then I had totally forgotten. When you are happy in your life, then you don't like it's very rare that you feel the sensitivity of people's pain. जब हम खुश होते हैं, जब everything is good, तब हमको इतना feel नहीं होता है लोगों का. पर जब when my husband expired and then when I was going through When you yourself go through it, yes. then you understand that pinch. Yes. कहाँ से क्या होता है, कैसे how it affects. Yes. Yeah, Yes. it is there. फिर when I started working with the बस्ती and all और वहाँ गरीबी, वहाँ की लाइफ, वो सब देखकर then I felt, फिर वो सारी चीज़ें जो हमारे इसमें मार्क कर जाती है बचपन में जो हमने किया होता है, that time all that comes out, all that वो सारी हमारी That was your calling, आपके life purpose. Yes. Maybe because you were meant to be, you know, I call them angels who do this, you know, for community, for people. You know, God sent. I feel this, we are just mediums. We were mediums, We are yes. mediums. But भगवान हमारा कुछ नहीं आके, है. God cannot come, you know, to come and hold your hand and do it. It's like God also makes arrangements. Yes, true. So through somebody or the other, किसी का आप मीडियम बने उनके लिए. हमारे लिए आप मीडियम बने हैं, हमारी चीज़. नहीं, मैं चाहती हूँ. This is my mission on Women Wise. So you are doing so many things. I want the world to know. आपके जानने पहचानने वाले, आपके कई जो भी जिसकी लाइफ एक इन्फ्लुएंस हुआ है आपके जो भी कर रहे हैं उससे, तो वो तो है ही. आपके ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, सब जानते हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर्स? You are doing so many things. People should know and take inspiration from them. At least वो अगर 100 लोग नहीं, 2 लोग भी अगर कुछ कर सके, और यदि वो मतलब लाखों नहीं और अगर हजारों भी स्पेंड करके अगर NGOs को सपोर्ट कर सके, कुछ डोनेट कर सके, तो नथिंग लाइक इट. बाक थे. हाँ, डॉक्टर बाक है. हाँ, उनके नाम पे. So इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताओगे तो. अच्छा, so thank you very much because this therapy needs a lot of awareness. और because it is not very well known, nobody knows that it works. ये बहुत ही it's a miracle for people and it is such a subtle miracle कि जब काम करता है ना तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे ऊपर काम कर गया है. अच्छा, इस तरह से है वो. So it's actually the extracts of medicated flowers. जैसे there are certain flowers like holly है, जैसे elm है, जैसे walnut है, जैसे स्टार ऑफ बेथलेहम है. सो ये सारे फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बनती है. जैसे होम्योपैथी का होता है वैसे ही इसका ये होते हैं जो एक्सट्रैक्ट्स. सो इट वर्क्स ऑन मेंटल इम्बैलेंसेस. तो हमारे शरीर में जो पेन्स, एक पेन्स और बीमारियां जब शुरू होती है तो रूट कॉज कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है. It starts from the mind, and because it is neglected, ignored for a long time. देखिए, आपको अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है या कोई काफी एंजाइटी हो रही है और we just carry on in our lives with the same symptoms और उसको पर ध्यान नहीं देते, वो कहीं ना कहीं नीचे दब के रह जाता है. सुपरफिशियली आप अगर किसी चीज में आपको अगर कोई और आउटलेट मिल गया, लाइक ठीक है, वो आपने एंजाइटी से बाहर आ गए विद सम अदर मेडिसिन और सम अदर टॉक काउंसलिंग के हिसाब से, और उससे आप बाहर तो आ गए उससे, पर कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में नीचे रह जाता है. Apparently it affects the other organs also. It should come out. Your expressions, the emotional detoxification. Yes, your emotions should come out. It should not be suppressed. I always tell my clients जो भी आते हैं कि कुछ भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्सप्रेस करना है आपको. इमोशंस जो भी हैं
एक्सप्रेस करिए। हाँ। वो दबा हुआ इमोशंस आपको बॉडीली और फिजिकली बहुत ट्रॉमा देता है। जो कैंसर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज, जो भी जो सीवियर डिजीजेस में जाते हैं, दिस इज बहुत गहरा उसका असर है, बहुत टाइम से आपका चला आ रहा है, जो आपको फिर ये सारी चीज़ें देता है। सो देयर एंड देयर व्हेन इट स्टार्ट्स, देयर एंड देयर आपको वहाँ पे अगर ऐसी थेरेपी से, प्ला थेरेपी से वगैरह कोई आपको इलाज हो जाए तो देन इट सबसाइड्स और वो पूरा आपका क्लियर हो जाता है। इट डजंट सबसाइड, सॉरी, इट क्लियर्स। अच्छा, निकल जाता है, निकल जाता है। तो you मतलब you are a therapist, or if anybody wants to get in touch with you, if just somebody wants to get treated or not, so we'll give your details. Yeah, sure, no problem. So Yes, if, you know, thank you so much. No, and it will be very helpful क्योंकि I would like to just share one case. जब मैं दीपगृह में थी, so there was one boy who was in the orphanage. दीपगृह का एक orphanage भी है. So there was one boy. So his mother had expired as soon as he was born, and then the father couldn't take care, तो उन्होंने वहाँ पे orphanage में रखा था। अच्छा। फिर कुछ समय बाद फादर ने दूसरी शादी कर दी, तो वो वहीं था। He grew up, he was 18 years का वहीं orphanage में हुआ वो। वैसे छुट्टियां आती है तो चिल्ड्रन आर सपोज टू गो टू फैमिलीज, तो शुरुआत में वो 2-3 बार गया अपनी फैमिली के पास, पर उसको कुछ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिली वहाँ। सो ही डिडंट वांट टू गो देयर। सो ही न्यू कि मुझे, मेरी फैमिली इज नॉट राइट फॉर मी और मुझे नहीं वहाँ रहना है। सो व्हेन ही ग्रो अप, व्हेन ही वाज 18, व्हेन द फादर केम टू नो कि अभी वो बच्चा मेरा 18 साल का हो गया है, तो अभी आई कैन कीप हिम विद मी, और वो अर्न करेगा तो मुझे भी उसका फायदा होगा। तो ही केम टू टेक हिम। 18 साल के बाद रखते नहीं है ऑर्फनेज में। सो ही केम टू टेक हिम कि एक दिन पहले आया कि इसको सब पैक वैक कर दो, हम लोग इसको लेकर जाएंगे। ही केम टू नो कि मुझे कल यहाँ से जाना है करके। ही वॉज इन सच अ शॉक। उसको नहीं जाना था बिकॉज उसको याद था इतने सालों से उसके साथ ट्रीटमेंट कैसी हुई है, उसको नहीं जाना था फैमिली में वापस। तो ओवरनाइट ही लॉस्ट हिज वॉइस। उसका आवाज ही चली गई थी। मॉर्निंग में उठा, रात में अच्छा भला सोया था, मॉर्निंग में उठा, ही डिडंट हैव वॉइस एट ऑल। ओह गॉड। यार सब सोच रहे हैं कि इसको क्या हो गया रात में इतनी देर में कि उसका वॉइस चला गया। Then when I was the counselor with them, तो उन्होंने वहाँ ऑफिस, मेन ऑफिस पे लेकर आया तड़ीवाला रोड। So then he talked to us and he just wrote down everything. उसको क्या, I sat with him, talk तो कर नहीं सकता था, he wrote down everything कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा कोक्स करना पड़ा उसको एक्सप्रेस करने के लिए। He himself didn't know what is going on with him. तो क्या हो रहा है, क्यों, मतलब क्या हुआ। सो ही रोट डाउन एवरीथिंग कि मुझे कल ऐसे ऐसे मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे ले जाने वाले हैं एंड आई डोंट वांट टू गो एंड ऑल। सो ही रोट डाउन एवरीथिंग। वो जब रीड किया मैंने, सो दिस इज अ ट्रॉमा लाइक विच शॉक जो मिला है उसको वो न्यूज़ पर। सो देन आई गेव हिम व्हाटएवर बटला रोड्स का जो ट्रीटमेंट था। 3 डोजेस लिया उसने, सिर्फ 3 डोजेस लिया एंड इवनिंग तक उसने मॉर्निंग का 1 डोज मैंने अपने हाथ से दिया। आफ्टरनून इवनिंग तक उसका आवाज came back. Okay. And he was normal. The next day he was normal again. So it is such a miraculous medicine. But it is not, people are not aware of it. That's what people need to know about all these things. That's my aim of having this channel, so people get to know about more and more, about so many things and what women are doing out there. And what is your vision for your future now? कुछ और सोचा, where do you want to get doing all these things? Okay, so as I said, we have started an NGO. So our motto of the NGO is pathways for change. So whatever change I could make in anybody's life, thoda sa, bada, whatever. So that is our motto कि
whatever we are doing at our NGO, उसका जो भी सोसाइटी को हम लोग पहुंचा सके, एंड डूइंग दैट किसी की लाइफ में शायद बहुत ही माइनर हो कोई चेंज, किसी की लाइफ माइट चेंज ड्रास्टिकली. So this is what our whatever I see my future as. So जो कुछ हम कर पाए, हाँ, keep doing, but ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी change हो, but still that holds a lot of value, not some value, a lot of value. जैसे आपने बोला किसी की आवाज़ वापस आ गई. Arva, you were mentioning about this Seher Inclusive Resource Center. So can you tell something about that? Yeah. Okay. So under our foundation's head, Pathways Foundation's head, we have started this resource center, which the name is Seher Inclusive Resource Center, where we work with special needs children. So we work for different like life skills, pre-vocational and vocational skills, even on academics. So whatever their needs are, we work for all those on like one-to-one basis. Okay. So that is our center. Okay. And for special needs children, you have one-to-one sessions that you conduct. Yes. Okay. So any timings or anything you want to give some details about it? So our center is at Camp, Convent Street, and timings are like from morning 11 to 3. We are working with children. Okay. The same phone number if anybody wants to get in touch with you? Yes, sure. That you want to convey to the viewers from whatever lessons that you've taken from life. Okay, so the message that I would want to share for people, that see, I just shared that how my life was difficult. So अगर मैं वही थक जाती और अगर मैं यही सोचती कि मेरे हस्बैंड नहीं, आगे के मेरे लिए कुछ है ही नहीं, दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, व्हाट कैन आई डू, आई एम हेल्पलेस. इफ मैं यही हेल्पलेसनेस से जीती रहती तो आई वुड नॉट बी वेयर आई एम टुडे. So my message to people is that only, that see, anything can happen in your life. Like we don't plan our life. So हम बहुत सोचते हैं, if it doesn't happen accordingly, you should not lose hope, and वहीं अगर रुक गए, if you break down over there and we stop there, like this is not going to help anybody. Nor you, nor your family, nobody. But you need to just pave your way out. जो like from stone age बोल रहे हैं कि those who have adjusted or adapted according to life, only they have survived. Survived, yes. That's the basic rule of that is the basic survival. Rule of nature, survival. तो हमको भी adjust करते रहना है. See, we are not sent by with a manual. हमारे आगे हमारे क्या होने वाला है सब किसी को पता नहीं. It's very unpredictable. It's very unpredictable. So you just be patient or take the Almighty के faith से. You just have faith and keep your just one thing that I have done since since my early days is to surrender. To surrender to the Almighty and say that you have given me this phase, or you have given me this, and this is up to you to give me the way. Pave ahead. the way for me. Yes. To go ahead. Yes. Yes. And you give me the strength and you show me the way to go ahead. So that is my surrendering has just given me, I think, the way out. Yes. So that is it. Yeah. And family support. Thankfully, my children are so. That is important, because otherwise, you just have to keep thinking about the family and you cannot move out. Yes. But that support is very important. And now, in fact, they are trustees in my foundation, so they are actively participating in whatever activities we do. So my daughter is also now. The entire family is there. Yeah. So viewers, we have actually heard a beautiful and inspiring journey of Arva, and challenges were thrown at her. Either you can make out of the challenges or you can get broken. Yeah. But she chose to learn take the challenges as the learning lessons,
or an inspiration to move ahead. And she learned, and then she is doing something for the benefit of the society. So what an inspirational journey. And I'm really thankful that you came, you spared some time with me, and for my viewers also to take inspiration from. And viewers, if you have such an interesting story to tell, do get in touch with me through the comment section, and we'll feature you also. Somebody who is as inspirational, we'll get them also on this platform. And if you like this video, do like, share and subscribe to your very own channel Women Wise, and also hit that bell icon to get the notification of all the upcoming videos. And your help, your support will always keep on motivating us and motivating the society as well. Bye bye for now. Thank you so much. Thank you, Women Wise, for giving me the platform.